Very good evening, everyone. Good evening, Ankit. Good evening, Usma. I'm good, thank you. How are you? Whatever doubts you guys are having, please do comment. TP3 hit, guys. How is your analysis going on, Usma? How is your analysis going on, Ankit? One more minute. Next to that is 1 hour candle. Don't look for an execution and running. Going really well. Great, great to hear that. 9 setup बनने दो तब तक. No looking for short. Anyone has any doubts in regards to the trading, please do ask.
Good evening, Usman. Good evening, baby. Sir, usually I only took orders in the direction, but today in the morning my supply and demand was towards long, but the market was moving towards the short. If you notice, this was the opening candle, right? Post that market gave an indication towards the selling pressure. With the selling pressure, what is the first thing that you'll be marking? You will be marking the demand allocation. What will be the demand we will be taking? This is the demand that you will be marking out from this point, right? So if the market could have taken the rejection, then you could have looked into the action plan. But what did market do? Market gave a break of structure. But with the break of structure, market created an indication of a buying pressure over here. Directly as a market move किया? Nahi. So what did market try to do? Market gave a movement. Again with the selling pressure, market completed the zone of action at 200% because there was one of the intact levels. With that intact level, market tend to move on the bullish side. So always you have to follow the rule of supply and demand in the allocation perspective of any movement starting from Asian session. So if you notice, again from 200%, indication was towards the buying side. Post that there was one drop because it has to make all the retailers set towards the short. Then once it's done, the market took an execution towards the long. That is the only formula that you have to follow. For that, you have to have a lot of patience. Good evening, Venkat. Are you in this long trade? किसको पूछ रहे हो? हम इस कैंडल से ही है. First point, second point, third point, and one trade we had executed at this point as well. Short की तरफ अभी नहीं. So today I took buy from 150%, then SL, then 200%, then I stopped. Okay, nice. 150%. You gave a SL of 40 pips. Great, good going. What's the accuracy, Usma, at the current stage? कुछ भी बोलो मत. आप जैसों के लिए कुछ बोलना ही नहीं है. Simple. Good going, Usma. Keep going. For the haters.
वर्षा इंडियन टाइमिंग का ही है ना? ओके, यस इंडियन टाइम. Execution 1 towards the short, which we captured 150 pips. 9:46 से लेके 11:37. Okay. So in perspective of short trade, with the short trade, it was a proper S to B1 setup. उसके साथ हमने short लिया. वो short होने के बाद, what was the next thing that we followed? A trade, right? So this was a long trade which we had captured, starting from 80 pips, 100, 130, 220, 310. अगर क्यों ये ट्रेड लिए थे करके जानना है, 1 सेकेंड, यहाँ पे देख लो, थ्री विंग करके हमने 11:37 को ही बता दिया था. ओके, विद दैट TP2 हिट, 1 आवर सप्लाई हिट. विद द 1 आवर सप्लाई 340 रनिंग था. अभी फोर्थ मूवमेंट आ चुकी है, जो कि TP3 विच जस्ट गॉट कंप्लीटेड नाउ. गुड इवनिंग अंश, कैसे हो? Sir, accuracy is not 100%, just like morning session, but I'm gathering. क्या बात कर रहे हो? 500 to 1000 pips. आज का पूरा दिन में मूवमेंट 400 पिप का है ना? Today's loss is also recovered. Then it's good. कोई रनिंग में लिया है? बहुत सारे लोग हैं. बहुत सारे लोग यहाँ भी लिए हैं. मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सो मैं चुप हूँ. किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज डू आस्क. डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स while you guys are in learning stage.
Sir, sorry, sir. I'm always get confused from pips and points. But by 500 pips daily, I meant with the add-ons like 300 from one order, then 200 from other. Okay, go get your point. Sir, don't know why ये week बिल्कुल अच्छा नहीं गया मेरा. उस्मान, as per me, आपने लास्ट मंथ ज्वाइन किया था. एक महीने में आपने बैक टेस्टिंग कर लिया. एक महीने में बैक टेस्टिंग कर लिया, फॉरवर्ड रिले बार टेस्टिंग कर लिया, 1 मंथ की लाइव एनालिसिस कर ली, उसके बाद आपने स्टार्ट किया. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, सर? स्टेप बाय स्टेप. Rule is very simple in trading. First, learn, then remove the L and earn. Wow, don't give surprises like this. Good evening, Varun. नहीं TP4 अभी दूर है. TP4 is directly 34112. फॉरवर्ड और बैक दोनों टेस्टिंग कर लिया. लाइव एनालिसिस में ट्रेड्स लगा रहा हूँ फॉर चेकिंग पर्पस. मतलब यू आर जस्ट पुटिंग द पोजीशंस, राइट? नहीं इतना जल्दी नहीं, वेट करो. इतना जल्दी थोड़ी रिवर्स होगा. ये रेड कैंडल जो दिख रहा है ना, वो भी ग्रीन में कन्वर्ट होगा. हाँ, देन ठीक है. डोंट इन्वेस्ट द मनी इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एनालिसिस. जस्ट नोट इट डाउन जहां जहां पे गलत हो रहे. एंड विद दैट, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. When you start, don't repeat that mistakes whatever you have note down in the 1 month of live analysis. ठीक है?
ये जो रेड दिख रहा है ना, बहुत जल्द ये ग्रीन में हो. Retailers love to be in the traps. हटाना है तो हटा दे तो, थोड़े देर के लिए. 15 मिनट की बोल रहे हो, 1 घंटे की बोल रहे हो? रेड कैंडल 1 घंटे की. पंद्रह मिनट की ये फॉलो करो. भाई ट्रेड अलोकेट कैसे करे सब कुछ समझ आ गया, लेकिन अलोकेशन कहाँ? गोल्डन क्रिकेट जीसी. 1 महीना ऑब्जर्व तो कर लो पहला. ऑब्जर्व फॉर 1 मंथ, खुद समझ में आ जाएगा. Sir, my MC square root and 15-minute supply completion is at the current point. Might be that was the reason for the candle being red, but holding until candle closes. सर एमसी कैलकुलेशन जो स्क्वायर रूट का है टीटीएस 1.0, वो लास्ट सीजन में ही खत्म हो गया सर. Q1 में ही खत्म हो गया वो.
जितने भी ग्रीड में रनिंग कैंडल में बैठे हैं ना, सबको उड़ाए। हमारे स्ट्रीम में भी है लोग जो उधर बैठे हैं। और एक नीचे जहां तक वो रेड मार्किंग है ना, वहां तक अगर मूवमेंट आ जाएगा तो उनको भी उड़ा देगा, जो हमारे स्ट्रीम में है। कहाँ कहाँ पे बैठे? People are sitting at 98. People are sitting at 96. People are sitting at 92. 92 वाला थोड़ा सेफ है, बट ये 99। इनको सब निकालेगा। 85, वो तो एड ऑन पॉइंट था ना, ये वाला। दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस सेटअप इज ओके, दिस एस टू बी वन इज ओके, दिस थ्री विंग इज ओके, दिस सेटअप इज ओके। तो इधर क्या बैठते हो यार आप लोग? माइंड कैसे आप लोगों को ट्रिगर करता है, जहां पे रिवर्सल होता है वहां पे लॉन्ग करना है आपको? ग्रेट। सर मैं एस एल हिट एट 1417 एट 3398। इंडियन टाइमिंग देख रहे हो ना? सब खुल के आएंगे अभी सामने। 617। वाह भाई साहब, क्या एंट्री लिए हो गया। वाई आर यू गाइस नॉट फॉलोइंग द सेटअप? रूल इज वेरी सिंपल एंड इजी नो। एस टू सेटअप बनने दो या थ्री विंग सेटअप बनने दो। जब तक वो सेटअप क्रिएट नहीं होता है आप लोग क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो? I don't know, sir, but MC square is working for me. Market always completes at least till MC square root and 15 minutes MC 2.0 golden. MC 2.0 you can work, not an issue, right? That is always there. But the square root one, the accuracy is dropped by 10%. So current accuracy of square root is running at 85. That's a very huge number, 10%. Where you had entered, Usmo?
Sir, what is the timing to be? What is the timing to set to global market? UTC करके एक होता है इधर. In the trading view right hand side where the time zone is there, no? Click on that, you will find this select UTC. People are dying to be consistent with 70% accuracy and you drop 85% accuracy setup just because it dropped in accuracy. 10% is a huge number. You're saying out of 10, 3 trades I have to close in red. I won't be doing that. Guys, 30 more minutes on candle closure. Follow the intact levels. Previous red candle bottom. If you are taken in this candle, good. If you are taken in this green candle, bad. Three wing setup में दो scenarios. There are two scenarios in three wing. Scenario one in the same direction. Three wick needs to be there. Scenario two, in the bullish movement in the green candle only the market gives you an indication of reversal. One red candle, next conversion, and this is the scenario. Yes, two, yes. And to be preciseful, market gave an indication with one, two, three. We took the intro over here. Here. Good, Isma. Keep it up.
अगर नीचे होना है तो इंटैक्ट लेवल से ले, उससे पहले नहीं। सबका एमटीएसएल मूव कर लो, प्रीवियस एमटीएसएल से 50 पिप्स ऊपर कर लो। Why didn't you execute over here, Rasma? Why didn't you execute at this point, this point? I understand you gave one SL over here, one SL over here, but you could have looked for this or this. नहीं, बीटीसी अभी इंटरेस्टेड नहीं है। बीटीसी 8 बजे को ट्रेड करो। जिनको 1500 पॉइंट चाहिए वो 8 बजे के बाद ट्रेड करो। Who is happy with 100 points? We don't recommend. They can look for trades. रुको जनाब, उड़ाने तो दो। जितने भी लोग फोमो पे थे उनको तो उड़ाने दो। How long will the stream be? There's 2 घंटा, 2 hours. Why is it taking rejection from this point?
कन्वर्जन ग्रीन में ही है, टेंशन क्यों ले रहे? दिस इज द पॉइंट. ओके, सरप्लस. बट ये तो हमारा स्विंग में कन्वर्ट हो गया ना, सो उसके लिए वो मार्क नहीं किया. Anything above 300 carry forward always for the swing trades. अगर ये कैंडल 5 मिनट में नीचे के लिए क्लोज होती है तो 150% तक आके रिजेक्शन ले सकते हैं. ओके, बिकॉज देयर इज नो मिनिमलिटी एंड ऑल. 150, 200. अगर 100% से रिजेक्शन लेता है then this candle should create a wick. बॉडी क्लेजर 100% के ऊपर होना चाहिए. नहीं नहीं, एमटीएस विल सेम पॉइंट, चेंज मत करो. Anyone has any doubts, please do ask. And follow the rhythm, okay? Understand the major action plan. How will you understand a major action plan? Whenever there is a sustainable movement which has gone above 400 pips, you have 40 points, right? Will it move directly for next 40 points? No. Because on the daily time frame, 400, which is 400 pips, which is equivalent to 40 pips, will give you an indication of breakout, right? On a breakout, it will make everyone sit towards the long retailer's perspective. With that perspective, market will always tend to take the recess, no? So this was the breakout point. From this breakout, whoever has sat in the trade, their SL is very much important for the continuity of the next moment, right? So in perspective of next moment allocation, you always have to look for a right retracement point, right? Which is on the completion of the demand. If you want to see it, I'll showcase it. What do you notice? This is a breakout, right? So definitely there will be people whoever are sat on top of this candle, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, उनका एसएल तो लेगा ना. Okay, so don't randomly sit.
Wait for the setups. So I don't fully grasp the S2 setups on UTC. 7:30 a.m. I usually only take reversal setups like 3 a.m. and 5 a.m. S2 setup on 7:30 a.m. कौन सा टाइम फ्रेम पे देख रहे हो जनाब? इंडियन या यूटीसी? 3 a.m. 3 a.m. पे रिवर्सल नहीं. Okay, this one. Okay, 3 a.m., 5 a.m. Okay, 7:30 a.m. UTC. Got it, got it. 7:30 में ट्रेड का है. यहाँ पे तो ट्रेड नहीं है. Okay, 5 a.m. I can understand. 3 a.m. also I can understand. But these are not reversal trades. These are retracement trades which you think of converting into a holding reversal trades. Right? Make sure going forward don't repeat it. If you want to look in perspective of session wise, what is the one thing you have to follow? Understand the wick pressures. Before market giving reversal, market could always create a wicks. Whichever side the wick is generating, think that market will definitely move in perspective of the same angle. Follow the chapter 6 in the book. Right? Why I am not looking for this reversal? Keeping in mind, New York session is started. What kind of a pressure do we see over here? Even this is a buying pressure, right? So only one thing you have to always keep in mind before taking a reversal is market should always give an indication. If you notice, movement direction is bearish, so wick creation is from top. From where did the market tend to change? 1, 2, 3. Definitely this drop was to remove the retailers, but in perspective the wick was towards the buying side, right? Same scenario. What do you notice? The yesterday's movement which we took, right? Why was this reversal indicated? Buying pressure started. 1, 2, 3. Execution in this because of S2 B2 setup, right? With the three way, right? Always, whenever there is a reversal or a retracement, market will always give you an indication. What do you see? Entire movement was with the buying pressure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What did market do? 150 pip का movement था ना? हाँ. It's just not one time. Each and every time you have to keep in mind. Keeping in mind, this was a proper circulating supply, so market took the hedge and come down to grab the liquidity of the circulating supply. But even this moment, allocation was in perspective of buying pressure, buying pressure, buying pressure, right? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वॉल्यूम का जो चैप्टर, right? I'll showcase you one more. Before the bearish movement, what did the market indicated?
selling pressure, right? यहाँ पे buying आई definitely. कितना आया buying? जितना मेरा previous demand था, जो conversion होता है, उतना ही था ना? Demand converted into supply. What do you notice? 100% rejection. But every point of time, the wick was towards the selling side. So that's how you look into the perspective of holding the trades in the direction. अगर bearish movement में buying allocate हो रही है, that means market is indicating you the retracement is going to come soon. Okay. So that's the major follow-up that you guys have to look in perspective of allocations in the trade. Okay, Usman? That's how you identify the reversal. And that reversals are always in perspective of completion of a demand or a completion of a supply. बीच में कहीं पे होते हुए दिखा है नहीं ना? Even in this retracement point, this red candle, which side of the wick is a bigger, right? That is the perspective of looking into the circumstantial movements in the direction till the targets haven't been met. That's the only step that can help you guys to hold the trades without fear. Yes, volume का. Hmm. एंड आप लोग नॉर्मल रिटेलर्स के जैसे फॉलो मत करो कि लाइक जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन पे मूवमेंट आती है. जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस डायरेक्शन में रिवर्स होती है. 1 hour. Look in 1 hour for the volumes. Examples. High volume candle was in this green candle, right? क्या किया? फॉलो थ्रू में लोगे तो ये सप्लाई था हमारा 1 2 200% तक हिट करके रिवर्स, right? With the high calibration point, where was the next reversal? The high volume indication was in perspective of this, right? What did market do? Market again followed the demand, 100% reversal. हमेशा याद रखना, जिस तरफ का मूवमेंट में वॉल्यूम दिख रहा है ज्यादा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में सप्लाई या डिमांड कंप्लीट करके मूवमेंट अलोकेट होते हुए दिखेगी आपको. ओके, सिंपल फंडा. आज का दिन का हाई वॉल्यूम पॉइंट ये है, करेक्ट? 200% डिमांड कंप्लीट करके किस तरफ मूवमेंट आ रहा है? ऑलवेज फॉलो अ सिंपल एंड इजी स्टेप, जो कि waiting with patience for reversals is very much important.
एंड अगर मार्केट एक ही वॉल्यूम जोन ऑफ एक्शन में दिख रहा है आपको, राइट, मतलब स्लो एंड स्टडी सेम डायरेक्शन जो हाई वॉल्यूम प्रीवियस है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आपको दिखती हुई मिलेगी। ओके, stream will be there for next 40 minutes. Whatever doubts you are having, please to ask. 6 मिनट में कैंडल क्लोज होगी 1 आवर की। किसी को भी कोई भी डाउट है, ट्रेडिंग रिलेटेड, मार्केट्स रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, प्लीज टू आस्क। एनएफपी में रहोगे नहीं? सर कितनी कॉन्सेप्ट्स अभी बचा है जो सिखाएंगे आप? हर दफा लगता है एक बस सीख गया, फिर कुछ टाइम बाद कुछ अलग बता देते हैं आप। मैंने कुछ अलग बताया ही नहीं है, ये सब एक कॉन्सेप्ट है, ये सब टीटीएस का एक कॉन्सेप्ट है। इस सबको हमेशा एक साथ में लेके चलना होता है टीटीएस में। जितने भी आप लोग बुक में पढ़ रहे हो ना गैस, टीटीएस का जो 30 चैप्टर्स है
30 चैप्टर सब साथ में लेके चलना होगा आपको. All 30 chapters is equal to one concept. Okay. 15 मिनट 15 में ही थक गया मैं. झूठे. Sir, can you please review my last comment on why I haven't took. Sir, can you please review my last comment on why I haven't took 6:30 a.m. order? One already, two losses in Asian session. Second on back testing. I find best results when I wait till the market pulled back at least till 10 pips from bottom. 10 points, right? आप points के हिसाब से बात करो उसमें. 10 pips is 1 point. If 3362 तक आती तो ट्रेड में एंट्री होती, वरना नहीं. 3362 तक आती. कौन सा कैंडल? 6:30. 6:30 का कैंडल 3362 तक आती तो. Okay, got your point. But this is in perspective of looking into the allocation of double bottom, जो कि गोल्ड फॉलो करता ही नहीं है. करेक्ट. एक स्पॉट दिखाओ जहां पे डबल बॉटम क्रिएट करके मूवमेंट आई. But way of thinking is good, but not in this script. Okay. That you are looking in perspective of allocations जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप बहुत ज्यादा होता है.
What a rejection from 150%. Running at 300 pips. Running 3 on 280 pips, 200 pips, and 140 pips. If this candle closes in green, I will look for another add-on. यहाँ पे डिमांड कन्वर्टेड इनटू सप्लाई लगा सकते हैं क्या? कुछ भी मत बोला यहाँ पे आप डिमांड लगाओगे सप्लाई कन्वर्जन पे, राइट? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? सो दिस इज माय डिमांड, राइट? रिवर्स होना है तो इस पॉइंट तक आने के बाद रिवर्स होगा, राइट? सो विच इज नॉट एथिकली राइट. न्यू ट्रेडर किस स्विंग से अलोकेट कर जहां जहां पे आपको पीओआई रेंज मिलता है ना, जीसी, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से यू कैन लुक फॉर एन अलोकेशन, राइट? यहाँ पे आपको पीओआई मिला था, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से देख सकते हो टीटीएस 2.0 अलोकेशन के लिए. ओके. रेसिपी बुक, ब्रदर आप हमेशा प्रॉफिट में होते हो. आई डू टेक लॉसेस बट लूजिंग क्लोजिंग विल बी इन ग्रीन. झूठ है. सच बताओ वरुण. सब एक ही दिन में सीखना है. It's been 1 month, all trades closing in green, Rishabh.
But yes, I do take losses as well, but rare. The major reason behind his success is mindset. आप एक पॉइंट ऊपर नीचे होते ही ये होता है. So holding power comes when your mind is calm and relaxed. Sir, if you miss the trade or the time of main activity, then how do you get into the trade? I don't get into the trade. I sit calmly till my next setup is created. I don't go in running candles, I don't go in FOMO, nor I look for an execution of reversal directly. मेरा सेटअप बनेगा, टीटीएस बताएगा कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, तभी ही एग्जीक्यूट होगी. Till then, I sit calmly, watch the chart, or keep teaching. If there is my setup, I look for an entry. If I miss it, it's missed. Simple. Nothing like that. RB takes losses but will be in green one. लॉस लाल में ही होता है, ग्रीन में कैसे होगा? इंस्टा आईडी मिल सकता है, इंस्टा आईडी मिल सकता है क्या? किसको पूछ रहे हो विश्व? हाँ बताओ, लास्ट 1 मंथ से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत इज इक्वल टू टीटीएस पॉइंट कहाँ है? एमसी एमसी कॉन्सेप्ट जो है वही टीटीएस है. वो सब पूरा मिला के एक कॉन्सेप्ट है, जीसी. आप सेपरेट सेपरेट देख के, आप ओके ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है करके लेके चल रहे हो, डेफिनेटली आगे भी कंफ्यूज ही रहोगे. राइट, जितना वीडियोस है ना उसमें, वो सब मिला के एक कॉन्सेप्ट है, टीटीएस. I got your book now starting from today. Great, great, Abdul. Most of the time, this day's major activity is in XAU on morning session, say early morning in Tokyo session. No, it's nothing like that. सेटअप क्रिएट होगा तो टोक्यो सेशन में भी लेंगे, सेटअप क्रिएट होगा तो लंदन सेशन में भी लेंगे, सेटअप क्रिएट होगा तो न्यूयॉर्क एएम और पीएम सेशन में भी लेंगे. ओके. द ओनली थिंग इज सेटअप क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर सेटअप क्रिएट नहीं हुआ, 100 पॉइंट्स की भी मूवमेंट आए, आई विल नॉट एंटर. माई ओनली वन रूल, सिंपल एंड इजी, setup needs to be created.
मीन्स जहां से प्रॉफिट आ रहा है आप नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कभी कभी छोड़ देते हैं यार। मेजरली फ्राइडे के दिन की छोड़ देता है, क्योंकि फ्राइडे आई गेट अप लेट। सो फ्राइडे फर्स्ट मोमेंट आई मिस। द 200 300 पिप्स का जो मोमेंट है आई मिस। ऑनलाइन बैंक, यूएसडीटी, दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। यूपीआई में ट्रांसफर नहीं होगी। हाई मार्जिन है, सतर्क होकर ट्रेड करना। जिनका कैपिटल लो है उनके लिए। ओके। हाँ डेफिनेटली, जब आई एम अवेक आई विल नॉट लेट गो द प्रॉफिट। अगर समझो क्लास चल रही है, मीटिंग चल रही है, राइट, डेफिनेटली उस टाइम में जो मोमेंट है वो मिस होता है, बट आई वोंट रिग्रेट फॉर इट। जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड होता है उसमें डबल क्वांटिटी में पंच आउट होती है, सो जो पिछले वाला जो मिस आउट हुआ था वो इसमें रिकवर हो जाती है। बट आई डोंट गेट इन टू द ट्रैप्स ऑफ फोमो। नॉर आई पैनिक, नॉर आई गेट ग्रीडी। हाँ कभी कभी हो जाता हूँ। डोंट यूज ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स आर गेटिंग फ्लैग। मतलब वो दुबई में रहता है, उसको क्यों फ्लैग होगा? व्हाट इज फ्लैग एट फर्स्ट प्लेस? अच्छा, मुझे लगा इंडिया में मोस्टली ट्रांजैक्शन दे आर मॉनिटरिंग एंड फ्रीजिंग। That's happening in only SBI in India, not in all the accounts. एंड सी, डेफिनेटली यार, आप एक अकाउंट में महीने में आप 30,000 विड्रॉ मीन्स डिपॉजिट हो रहा है सैलरी, ओके एग्जाम्पल, राइट। आप महीने में डिपॉजिट किए 1 लाख, ओके। फर्स्ट टाइम दे विल नॉट, सेकेंड मंथ में भी तुम्हारा क्रेडिट हो रहा है 30 सैलरी, उसके बाद फिर से 1 लाख, देन यू विल बी फ्लैग। So always the deposit should be in perspective of an allocation in perspective of monthly में जितना डिप्लॉय होता है उतना।
या डेफिनेटली एसबीआई वाले थोड़ा सतर्क हो जाइए. हाँ, वो मैं भी बोल दूंगा. एनीथिंग विच इज अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर, सतर्क हो जाइए. बैंकिंग में केनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, which is connected to the government. Stay safe. Not the private bankings, but yes, this bankings. या बिजनेस रजिस्टर करो, जीएसटी सर्टिफिकेट लो, जीएसटी सर्टिफिकेट लेके. However, the transaction is not done through Exness, so you can provide them the proof saying that you have done some work for them. With that work, you can give the legislate on the tax of 18%, because the transaction is not done through Exness, it's done through P2P. Okay. No, sir, they froze my Kotak and Federal. They say you are receiving money from suspicious accounts. What is your yearly earning, Venkat? Depends on that. No, sir, they froze my Kotak and Federal. They say you're receiving money from suspicious accounts. Wow. पहली बार सुना है. उस्मान क्या मैसेज भेजे थे? What is your yearly income? Depending on that, the tax will be collected. And one-off times you are removing, then it won't be an issue. Right? अगर regular withdraw करना है तो register a GST company providing services. Through that services, you can pay 18 to 25%. That is the range in India. With that, you'll be having in hand of कितना है, 2 लाख है या 20,000? 20,000. 30% ही लेके चलो. 14,000 in hand होगा.
Oh, government will ask you separate also, is it? If you're salaried, if it's in the same range, well and good. Ask the government. इंडियन शेयर मार्केट में कितना देते हो? ब्रोकरेज फी देते हो? उधर नहीं पूछते हो वही करके? IGST, GST, उसके ऊपर ऑप्शंस के लिए 20%, राइट? नाउ TTS, सॉरी, ये भी शुरू कर दिया TDS भी on transactions above 50, 2%. मैं 30% रफ फिगर लेके चल रहा हूँ, 60 पिप्स होने। तो पैसे कैसे निकालोगे? USD? क्रिप्टो में तो 50% है। वही सो है, क्योंकि बोल रहे हो तो सैलरी भी तो 30% जाता है ना टैक्स। The stream will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask and related to markets and related to trading and related to finance.
क्यों चिढ़ा रहा है? मैंने पहले ही बोला था आई विल बी इन द ट्रेड। दूसरे लोगों को क्यों चिढ़ा रहा है वो पूछ रहा हूँ। Sir, can you give your analysis on previous candle? I could enter towards long as soon as market hit the 200%. 3387. Why will you look for a 3387 trade of execution? Say me one thing. Did we had a minimality? No. Right? In perspective of allocation, the market started to give a pressure allocation point from here. Right? A candle closure above the previous red candle. Definitely, this was one of the meeting candles, so there was a drop. But in perspective of an allocation, what is the next thing that you have to look? If the market wants to come down till this point of 200% rejection, it has to create a selling pressure in next 2 to 3 candles. With that next 2 to 3 candles of allocation, that's when you will be looking for a trade which will be converted towards this short, right? In perspective of if you want to look at a long trade from 3387, that couldn't be a right scenario at the current state. Okay, Usman? Good evening, Sandy. How are you? How is your back testing going on? How is your forward testing going on?
It's nice in BTC gold, but Indian indices I'm struggling. Remove gap up and gap down allocation perspectives in the Indian markets and allocate only with the candle to candle. You will definitely be able to capture it. Guys, spam messages are there. Please be careful. Can you elaborate a bit, if possible? When you mark a demand, let go this gap up, let go this gap downs, right? Sorry, gap up and gap downs, and allocation will be body to body. Wick means wick भी रहने तो चलेगा, but don't consider this positions, right? Allocations will be looked in perspective of the same. Why there is a confusion? This was the supply, right? So that was the target. What's new in it? This was the supply. That was the target. Follow TTS 2.0 over here, right? Same prospect. This is the demand. Exact moment, right? So it always follows. It's not like it doesn't follow. You just have to let go the gap up and gap downs to allocate the structures. You might be hunting in 15 minutes, sorry, 5 minutes. No, it should be always in 15 minutes. Okay. So just let go the gap up and gap downs, and allocations will be in perspective of the same. Sir, why no BTC only gold? Today there is no moment of 1500 points. So no BTC today. 8 बजे के बाद देखो ना, यहाँ पे एक सेटअप बनेगा या यहाँ पे एक सेटअप बनेगा उस सेटअप के साथ. चलो ड्रॉ भी नहीं हुआ था, अच्छा हो गया. Supply multiplied allocation with the demand, minimality created,
M2 है तो 200% की टारगेट होगी, 200% की टारगेट हिट होके कंटिन्यूटी में है. In this perspective, what is the next plan of action we'll be taking? Conversion. How is the conversion look? The last retracement of the supply will act as my demand, which did over here, and took a rejection exactly from the same point and the continuity. There was one rejection from 150%, but M2 जब create होता है, direct target will be of 200%, right? With this 200% of allocation, what is the next thing that you will be working on? The next thing, when 200% is given a break, you will draw a surplus. Surplus will be taken the entire movement, right? When you take an entire movement, the allocation will be in perspective of the same, right? What do we notice? Again, a minimality 150% target and 200%. So this will be the next allocation point. Why was this trade moving with the bullish setup? Three-wing setup. Three-wing setup के साथ movement ऊपर के लिए जा रही है. Okay. Minimality M1. Minimality M2. This is surplus minimality. Okay. M1 का टारगेट डायरेक्ट 150 200. यहाँ पे 150 रिजेक्शन नहीं था तो डायरेक्ट 200. कितना रिट्रेस हुआ मार्केट में? ये मेरा डिमांड है. फर्स्ट अलोकेशन पॉइंट 100% break and continue. Exact 200% rejection. Okay. Each and every time. It has only one rule. Rejection कितना लेगा? Previous measurement का 100 या 150, not more than that. Sorry, rejection कितना लेगा? Previous retracement का जितना भी point of action है, उसका 100, 150 या 200 उसी range में ही होगा. My bad, I missed out that 200, right? Retailers कहाँ पे बैठेंगे? इसका ब्रेक पे, इसका ब्रेक पे. ये पूरा लिक्विडिटी जोन ऑफ एक्शन है ना अभी. ओके. 1 आवर के हिसाब से डालना है तो अलोकेशन पर्सपेक्टिव कैसे देखोगे? Where is my demand? Do we have a break of structure? No. When there is no break of structure, allocation is only till the body, right? Sorry. जब break of structure है, छोटा है या बड़ा है, it doesn't matter. But break of structure होना जरूरी है wick to wick लेने के लिए. This is the allocation point. What do you notice? 1 hour exact rejection from the point of action. अगर without minimality चाहिए तो this is the supply. We have a break of structure till the wick. Allocation point number 1. Without minimality 200% target. Okay.
Always remember when you're working in BTC, 1 hour and 15 minutes should be aligned with each other. Same goes with gold. Usma, what do you notice? What is the pressure indication that market has given? Second candle as well, right? So always before market gives a change, right? It always creates the wick. So follow that wick. When you follow the wick, you will be always in a right direction. Right? Keeping in mind this wick creation was in perspective of the meeting candle. मीटिंग कैंडल को साइड में रखो. मीटिंग कैंडल होते ही जो भी मूवमेंट अलोकेट होती है, that will be the major allocation points to look into the perspectives, right? तो ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि अभी इस प्रोसीजर में ये जो करंट कैंडल जो बन रही है, राइट, उसको कंप्लीट होने में सिर्फ 12 मिनट्स पेंडिंग है, क्योंकि 1 आवर का कैंडल है. 1 आवर का कैंडल ग्रीन कन्वर्जन से रेड को आती है, दैट्स व्हेन द रियल गेम विल चेंज. Yes, always let go the meeting candles. गुड इवनिंग रितेश. पूछिए. उस्मा, चेंज हुआ माइंडसेट. 3387 से आप लॉन्ग के लिए देखने वाले थे ना? डिड द मार्केट गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ सेलिंग प्रेशर? हाँ, थोड़ा बढ़ाए के बन गया, वो अलग सिनेरियो है. सर क्या आप ये शॉर्ट पे हो? नहीं. ये मीटिंग खत्म होने के बाद मूवमेंट आया, बट मजेदार आया. हाउ विल यू allocate दिस? वेरी इजी, नो? सरप्लस मार्क करना भी इजी है इसमें, डिमांड मार्क करना भी इजी है. 1 second. Right, this is the allocation point. Because 200% break and continue, target is still this point.
अंश जी सेकेंड टाइम गुड इवनिंग बोल रहे हो। अगर किसी को भी जानना है क्या मैं ट्रेड में हूँ शॉर्ट का नहीं हूँ। हमारा लॉन्ग का ट्रेड चल रहा है। एसएल कहाँ पे? MTSL 150 पिप्स में। Mind blown, sir. You saved one SL. In 1 hour, there was a minimality formed on 3rd June at 6 a.m. UTC. It didn't complete on 50% and reversed from 100% completion. How can we prepare ourselves to exit in such cases? Follow chapter circulating supply in the book. This is a surplus, huh? Don't get confused. What is this marking? If I want to look for a short at this current stage, I look for an intact level. With the intact level, I look for a short, not prior to that. Okay. फोमो नहीं हो रहा है भाई। तुम 150 पिप्स को फोमो बोल रहे हो तो ये 400 पिप को क्या बोलोगे? कुछ भी बोलते रहते हो। एक ही तो ट्रेड मिस हुआ है ना, 150 पिप्स का। सो व्हाट? Stream will be there for next 15 minutes. कौन बंदा है? Boom. 1 hour break. Sorry, circulating supply थे. My bad. MC 2.0 will be in perspective of the same, huh? No changes. Swing low, swing high retracement.
एलटीडी वाले और एक एड ऑन देख लो. Yeah, scenario 1 and 2 get mixed and complete in the action plan of the previous. Yes. Excel theory 1 and 2. नहीं नहीं, कोर्स नहीं है हमारे पास विजय जी. We have a book which is there in Amazon. टेलीग्राम पे पिंग कर दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. बिना डिस्काउंट का खरीदना है तो अमेजोन पे है, यू कैन बाय इट. इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, अभी बता दे रहा. नहीं, परपेचुअल मूवमेंट अलोकेशन देखना, ठीक है. अरुंधति मैम. वरुण शांत हो गया, क्या हो गया उसका? उसका एमटीएस से ट्रिगर हो गया. ऊपर का ट्रेड तो लॉस में क्लोज किया होगा. सीटीसी. ग्रेट. 2 घंटे हो गए, रुको यार, मेरा भी ट्रेड चल रहा है लॉन्ग का. इसका नीचे आता है तो मैं क्लोज करूंगा. यहाँ से रिजेक्शन ले लेना चाहिए. बट वॉल्यूम देख के कुछ और ही बता रहा है. कंप्लीशन ऑफ हाई कैलिब्रेशन. Sir, how to join Telegram group? We don't have any Telegram group. We have one Exness group. Whoever joins through our Exness, we add them in that. Buying pressure 1.
If this candle also creates a buying pressure, then this will be the second buying pressure candle. Remember, a lot of intact levels are pending on towards the long side. मतलब इस short candles में intact level बहुत सारे हैं. बहुत सारे हैं मतलब दो ही है. हाँ. Please bear with my Hindi. Okay. If you say share the screenshot, they will add you in that group. No other Telegram channels. What is MNP and LTT? That is a one-on-one sessions. Guys, liquidity salute is getting created. Segregation point आएगा तब entry लेना उससे पहले नहीं. Okay. Finally ये आज के दिन में trade close करा के ही रहेगा मेरा. Where is your entry? 3280 3251 300. और एक नंबर क्या था और एक एंट्री है रुको 3332. दिस आर थिंग ये वाला एग्जिट एट एमटीएसएल यहाँ पे उड़ा दिया मेरा. ग्रेट. ये कैंडल क्लोज होना चाहिए इसी विकी विक प्रेशर के साथ तब मजा है. तब कंटिन्यूटी में रहेगी ट्रेड. व्हाट अ रिजेक्शन. Always remember, trades execution will be taken in perspective of your mindset, your learnings, your strategy, your money. So make sure you don't trade in FOMO, execute the trades in running candle, follow the TTS concepts, make sure that you protect your capital and you don't blow it in the markets. Wait patiently, execute the trades in the directions of the market, not against it. Trade what you see, not what you think. Make sure that whenever you're executing the trades, there is a setup to execute, not before or after the movement is done. This is Nitesh signing off. मिलते हैं next week. तब तक के लिए take care. Bye bye. धन्यवाद.